I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear students, I'm Sir Jhangir. Let's start our next lecture, which is lecture number 14, and we are on the same unit 1.2, Jinnah's Vision of Pakistan. Jinnah's Vision of Pakistan. So this is a chapter which we are studying. Now come with me and the page, open your textbooks, the page is 23. The page is 23, open your textbooks, page number 23. Let's see what's happening there. Page number 23, and we were, and what is more, almost one, that's 9 lines, page 23 of your textbook. And what is more, और बहुत अहम जो चीज़ है मज़ीद वो ये है कि it will be proved, साबित कर दिया जाएगा, it will be proved, साबित कर दिया जाएगा by actual experience, असल तजर्बे से, actual experience, असल तजर्बे से, as we go on, जब हम आगे बढ़ते हैं, that it was the only solution of India's constitutional problem, कि ये वाहिद हल था इंडिया के constitutional आइनी मसले का, India's constitutional problem, आइनी मसले का, India's. So you're looking at India, there is a apostrophe. So I told you that in somewhere that apostrophe is used to show possession of noun. So India is a noun. So that's why here to show the possession of noun we use mark of apostrophe. Any idea of United India, कोई भी idea, any idea of a United India could never have worked. कि अगर हम चाहते कि इंडिया मुत्तहिद होता, इसका कोई आइडिया लाते, तो वो इतने अच्छे अंदाज में काम ना कर पाता. And in my judgment, और मेरी जजमेंट के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक, it would have led us to terrific disaster. Terrific disaster. कि हमें ले जाता terrific disaster. Terrific means horrible. Disaster, destruction. A terrible disaster. Clear terrible disaster. A horrible destruction. Clear disaster, destruction, terrific, horrible. Clear? Terrific. Terrific, horrible. And disaster. Disaster, destruction. Alright, so terrific destruction. Okay. Maybe that view is correct. हो सकता है कि view correct हो. Maybe that view is correct. You're looking here what's happening. Full stop and then there is comma. This is called semicolon. 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 I told you that in the previous lecture there were a lot of colons were used. The main difference when the less stress is required, we normally use semicolon. When more stress is required, we use colon. So almost they both have the same use, not much difference in use, but the main thing is that semicolon used when we show bit less stress. But when we have to show more stress, we use colon. Maybe that view is correct. Maybe it is not. There remains to be seen. ये हमें देखना होगा. All the same, in this division, it was impossible to avoid the question of minorities. It was impossible, ये मुमकिन था to avoid कि हम नज़रअंदाज कर दें the question of minorities, अक़लियत के सवाल को. Being in one dominion or the other. हाँ वो एक इलाके में है या दूसरे इलाके में. Dominion इलाका, area. No, that was unavoidable. Unavoidable means which cannot be avoided. Which cannot be avoided, which cannot be neglected, which cannot be ignored. Unavoidable cannot be ignored. There is no other solution. इसके अलावा, इस तक़सीम के अलावा और कोई हल नहीं था. No, what shall we do? अब हम क्या करेंगे? What shall we do? अब हम क्या करेंगे?
Now, if we want to make this great state of Pakistan happy, अगर हम चाहते हैं इस पाकिस्तान की रियासत को खुशहाल बनाना, prosperous means खुशहाल, happy खुश, खुश खुर्रम और खुशहाल, prosperous खुशहाल. We should wholly and solely concentrate, हमें मुकम्मल तौर पर concentrate, wholly and solely means completely and only. Concentrate, हमें तवज्जो देनी होगी, concentrate तवज्जो देना on the well-being of the people, लोगों की बेहतरी की तरफ, well-being. You're looking there once again, small dash, which is not dash, which is basically hyphen. Okay, that is a hyphen. And especially of the masses, और ख़ास तौर पर लोगों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी. Masses means people. And the poor, और गरीब लोगों की तरफ. You will work in cooperation, अगर आप काम करेंगे ताउन के साथ, cooperation ताउन, forgetting the past, और आप भूल जाएंगे अपने माजी को, कि माजी के जो झगड़े थे, जो लड़ाई थी मुत्तहिद इंडिया में जो हो रहा था, आप उसको भूल जाएंगे. And you think that no, you are Pakistanis, you will live in a very much happy way here in Pakistan. Forgetting past, burying, burying means ख़त्म करना. Burying the hatchet, burying the hatchet means दुश्मनी ख़त्म कर देंगे. It's a very common idiom, bury the hatchet. Bury the hatchet, दुश्मनी ख़त्म करना. To end enmity, to end enmity, very common idiom. You are going to succeed, तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे. If you change your past and work together, अगर आप तब्दील कर लेते हैं अपने past को and work together, और आप इकट्ठे काम करते हैं in a spirit, एक जज्बे के साथ, that every one of you, no matter to what community he belongs, कि इससे कतई नज़र कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस जो है आपका किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है. No matter what relation he had with you, इससे कतई नज़र कि माजी में आपका क्या ताल्लुक़ था. No matter what is his color, इससे कतई नज़र कि क्या उसका रंग होगा. Caste or creed, caste or creed, caste means जात पात, creed means अकीदा is first. Second and last, a citizen of this state with equal rights. So आपके लिए सबसे अहम बात क्या है कि वो शहरी है इस रियासत का, with equal rights, बराबर के हकूक़ के साथ, with equal rights, बराबर के हकूक़. Privilege, privilege means special rights. Privilege, special rights. Obligations, obligation means duties of rights. Obligations, rights. There will be no end to the progress you will make. कोई इख्तिताम नहीं है इस तरक्की का you will make, जो आप कर पाएंगे. Clear? So no end to the progress you will make. कोई इख्तिताम नहीं है, आपकी जो तरक्की है वो unlimited होगी. Okay. So here the word is the progress. To no end to the progress. No end to the progress. No end to the progress. We progress. Okay. So often comes in your objective portion. Look here, this is progress and this is progress. As far as part of speech is concerned, do you think that these are both have same part of speech? Not at all. Here you're looking at no helping verb, and this is the first form of verb. Here progress is used as a form of verb, but here progress is not a verb. If you are not understanding, I told you that whenever article is used, after article always there is a noun. So this progress is a noun. Clear? Don't think that always progress is used as a verb. This is noun, and this one is this is a verb. Okay, now continue. I cannot emphasize it too much. मैं इस पर बहुत ज़्यादा जो है emphasize
स्ट्रेस नहीं करना चाहता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वी शुड बिगिन टू वर्क, हमें आगाज़ करना चाहिए काम का इन दैट स्पिरिट, इस जज्बे के साथ। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज़, और वक्त के साथ साथ ये तमाम एंगुलरिटीज़ मीन्स कि तमाम जो इख्तलाफात हैं, एंगुलरिटीज़ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द मेजॉरिटी एंड द मिनॉरिटी, अक्सरियत और अक़लियत के जो भी इख्तलाफात हैं वो सब जब साथ रहेंगे और अपने आप को एक रियासत के तौर पर सोचेंगे, एक रियासत के फ़र्द के तौर पर सोचेंगे, all these things will be removed. Our angularities, our conflicts, all the things which are creating unrest among us, all those things will be ended sooner. The Hindus community and the Muslim community, because even as regards the Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shia Sunnis and so on. So अगर आप मुसलमान के लिहाज से बात करते हैं तो आप मुख्तलिफ इलाकाई इख्तलाफात में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ फ़िरका वाराना इख्तलाफात में बटे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी साथ रह रहे हैं और यूनाइटेडली। So similarly, if you belong to some other religion, other creed, when you think that you are in the same country, you are people of the same country, then you will be quite comfortable here. And among the Hindus, you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis, and so on. So, Kazi had told us about the different divisions, the different communities, not only of the Muslims, also of Hindus. So, if we are giving less importance to those divisions and giving more importance to the our link with the state, our link with the country, then we will be quite here in a good way. We lead and we can prosper in a good way. We will vanish. So ये तमाम चीज़ें remove हो जाएंगी. Vanish means remove हो जाना. Indeed, if you ask me, यकीनन अगर आप मुझसे पूछेंगे, this has been the biggest hindrance, कि ये बहुत बड़ी रुकावट होगी, the biggest hindrance, the second, the third degree of adjective. Clear article da is there and da is used for your noun. Hindrance is noun here, which means obstacle or रुकावट. In the way of India to attain freedom and independence, कि हमने आज़ादी हासिल की, else we should have been free people long ago, कि अगर ये रुकावटें ना होती तो हम बहुत पहले आज़ाद हो चुके होते, कि ये रुकावटें, ये जो इख्तलाफात हैं, इन्होंने ही हमारी आज़ादी के इस सफ़र को तवील कर दिया. No power can hold another nation, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती किसी भी कौम को, especially a nation of 400 million souls, खास तौर पर एक कौम जिसमें 400 मिलियन लोग रहते हों, उनको आप सब्जेक्शन में नहीं ला सकते हैं. सो इन सब्जेक्शन उनको आप बहुत अरसा अपने रियाया नहीं बना सकते हैं ताकत के बिलबोते पर. Nobody could have conquered you, कोई भी आपको जीत नहीं सकता था. conquer जीतना, विन करना. and even if it had happened, और अगर ऐसा किया गया, nobody could have continued its hold on you, कोई भी कंटिन्यू करता है इसका होल्ड आप पर for any length of time. But for this, therefore we must learn a lesson from this. हमें यकीनन एक लेसन सीखना होगा इससे. You are free, आप आज़ाद हैं. You are free to go to your temples, आप आज़ाद हैं अपने मंदिर में जाने के लिए, temples मंदिर. You are free to go to your mosques, आप आज़ाद हैं अपने मसाजिद में जाने के लिए, और to any other place of worship in the state of Pakistan, और कोई भी जगह जहां आप इबादत करते हैं इस पाकिस्तान की और रियासत में. You may belong to any religion, आप ताल्लुक़ रख सकते हैं किसी भी मज़हब से, और caste और creed. Caste means ज़ात, creed अकीदा. That is nothing to do with the business of the state.
इससे रियासत के काम को कोई मसला नहीं है। The next page. Now I think we should keep that in front of us as our ideal. So मेरा ख्याल ये है कि we should keep, हमें रखना है in front of us in our ideal, कि ये हमारा ideal होगा। And you will find that in the course of time, और आप पाएंगे वक्त के साथ साथ Hindus would cease to be Hindus. Hindus अपने आप को समझना छोड़ देंगे, सीज में ख़त्म करना, छोड़ देना। एंड मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स, और मुसलमान मुस्लिम होने को छोड़ देंगे, बल्कि सब एक रियासत के शहरी, सबके लिए अहम क्या चीज़ होगी, मुक़द्दम क्या चीज़ होगी, बेहतरीन क्या चीज़ होगी, टू बी कॉल्ड पाकिस्तानीज़। नॉट इन द रिलीजियस सेंस, मजहबी लिहाज से नहीं, बट दैट इज़ द पर्सनल फेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, बल्कि ये सबका ज़ाती इत्क़ाद होगा, यकीन होगा अब ईच इंडिविजुअल, हर फर्द का। बट इन दैट पॉलिटिकल सेंस, बल्कि सियासी लिहाज से, एज सिटीजन ऑफ द स्टेट, के सियासी लिहाज से हम सब एक होंगे, मजहबी लिहाज से हम अपने मज़ाहिब के मुताबिक होंगे, अपनी आइडेंटिटी कायम रखेंगे, अपना शख़्स, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त कायम रखेंगे, लेकिन कौमी लिहाज से हम सब पाकिस्तानी होंगे। Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time. मैं मज़ीद आपका टाइम नहीं लूँगा। And thank you again for the honor you have done to me. जो इज़्ज़त आपने मुझे अता की। I shall always be guided. I shall be guided by the principles of justice. मैं हमेशा रहनुमाई लूँगा या मुझे रहनुमाई दी जाएगी by the principle of justice and fair play. असूल जस्टिस के, इंसाफ के, एंड फेयर प्ले, अच्छे काम के, विदाउट एनी, एज इज़ पुट इन द पॉलिटिकल लैंग्वेज, जैसा कि एक सियासी लिहाज समझा जाता है। प्रेजुडिस और इल विल, प्रेजुडिस मीन तासुब, इल विल मीन्स एक बदनीयती के मुताबिक। इन अदर वर्ड्स, पार्शियलिटी और फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी मीन्स जानिबदारी, किसी को अनड्यू फेवर करना, फेवरेटिज्म भी किसी को अनड्यू फेवर देना। सो यहाँ पर ये नहीं होगा, बल्कि इंसाफ जो है वो ज़्यादा अहम समझा जाएगा। माई गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मेरे रहनुमा असूल हैं, विल बी जस्टिस, वो क्या है, इंसाफ है, एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, और मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी। इम्पार्शियलिटी, गैर जानिबदारी। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, आपके ताउन से और आपके कोऑपरेशन से, आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान, मैं देख सकता हूँ पाकिस्तान को बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान बन जाएगा एक अजीम कौम दुनिया की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की जो अजीम कौम है उनमें एक पाकिस्तान होगा। ओके, so after this there are the words, vocabulary, new vocabulary, try to cram them, because all these things are very much important for you to improve the vocabulary of your English vocabulary, and also these will be there in your objective portion. And also there are some very important idioms in this chapter. They can come in your idiom, which is also in your second year syllabus. Yes, class, we have ended our unit 1.2. We have completed its reading, its translation, and the difficult word meanings. Anyhow, no, you just go to the exercise and see the question answers, read them, learn them. Having any problem, do tell me, do consult with me. Thank you, class. Take care. Bye.